So good afternoon, everyone, and welcome back to EPS Lab Sessions. Now, let me make you aware of Google Classroom first, where actually you are going to upload your practicals that you have performed, and then we'll continue with the program list. Okay, so right now, what you see on your screen is the Google Classroom I have generated streamlined page. Now I've added you the entire class and I've sent the invitation. Even as I can see, some of you have accepted the invitation also. Now, once you accept your invitation and you go to your Google Classroom, you'll be on the stream page, and whatever I announce, you can have a look at those announcements in this stream page. Fine? So, first announcement was just a welcome message. And the second announcement I've done here is in this classroom has been generated mainly because you are going to submit your practicals, your term work, okay, in this Google Classroom. I'm going to generate few classworks, and at that place, you are going to upload your files. So what you need to do is you need to perform your practical. You all are performing it. I know that, hopefully. And then once you are done with your practical work, once you perform it, you have to write your program and then its output. Whatever output you get, once you run your program, whatever output you have, you simply need to write your code and your output in a page or in a book, whatever you want to create, it's up to you. You simply just write down everything handwritten. Make sure I want it handwritten. अब हाथों से लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ because once you write it, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में छप जाएगा. Deliberately, I want that to happen. अगर आप हाथ से लिखते हो तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ज़्यादा जाएगा. That's what I want it here. And that's the reason. Let me clarify. आपको पूरा कोड कॉपी पेस्ट करके C फाइल अपलोड नहीं करनी है. आपको पूरा कोड कॉपी पेस्ट करके वर्ड में डाल के डॉक फाइल अपलोड नहीं करनी है. You have to write everything on a page, handwritten code, handwritten output. Then you can take a photograph, scan your page or a book, convert it to PDF, and then you have to upload that PDF once I generate your classworks. Okay? अब जब आप लिखते हो, मान लो कि प्रैक्टिकल 1 उसका कोड लिखा, उसका आउटपुट लिख दिया. Now title, now just for you to have those titles, I have also given that syllabus file in this Google Classroom. Even the syllabus file is also there in the e-content. So e-content से आप निकाल लो या तो फिर यहाँ से ये पूरी syllabus file download कर लो. You'll have those practical list, the practical list that we every time go through, right? तो ये प्रैक्टिकल लिस्ट, उसके टाइटल्स जो हैं वो आपको सिलेबस फाइल के अंदर से मिल जाएंगे. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू फर्स्ट से प्रैक्टिकल नंबर एंड इट्स टाइटल, उसके बाद उसका कोड लिख दिया और कोड ख़त्म होने के बाद उसका आउटपुट लिख दिया. वंस यू राइट इट देन यू हैव टू स्कैन इट. फोटो निकाल लो, मोबाइल से स्कैन करो, कन्वर्ट इट टू PDF और वो PDF अपलोड करनी है. Now, where do you upload those PDF? So, in this classroom, I'm going to generate few assignments. I've already generated, but all are the drafts right now. Once I finally assign it, these practical assignment list you will see in your page, in your login. Okay, so let me show you. So what we'll do is once I generate an assignment from this place, मुझे जो कुछ भी यहाँ पे instruction और देना हो दे सकता हूँ, and I'll assign some points. Deadline, you have to upload this practicals PDF file by this date, June of 25th.
Okay. So once I assign this, this will be there in your login. और वहाँ पे आपको assignment attempt करने का option और file upload करने का option मिल जाएगा. Now this is a single assignment, practical 1 to 7. Total 7 practical, सातों practical का title भी है यहाँ पे. Now this is a single assignment. So what you have to do is, you have to write all these 7 programs and outcomes, and ये सातों प्रोग्राम को आप एक सिंगल पीडीएफ क्रिएट करके अपलोड करोगे. सो आप अपने बुक में या पेज में कहीं पे भी 7 प्रोग्राम उसके आउटपुट लिख लो, and then you scan those pages and create a single PDF, and that single submission I want you to do here. So let me just assign this one right now. Right, I have assigned this to all 47 students, entire class, who have accepted the invitation right now. So you have to now look into your Google Classroom login, go for classwork. Even on your stream page, upcoming assignments will be listed here. Okay. Let me refresh the page. Very soon, you will see that assignment in this page, in your stream page. You will see that assignment. Okay. As you can see it here, I have already assigned that thing. All the assigned students are there, and I can evaluate your submission. Once you do your submission, I can evaluate it from this place. Okay, so just for now, just to make you aware that how you are going to follow this thing. Accept the invitation. अगर अभी तक नहीं किया है तो आपको मेल आया होगा, check करो. Click on the given link, accept that invitation. You will be enrolled in this classroom. Go to your classwork, or else have a look at the stream page and go to that practical, and you upload your PDF file there. Okay, what you have to do, you have to write all the programs and its output, scan those pages, convert to a single PDF file, and upload it as a single practical. दूसरे assignment के लिए दूसरी file generate करोगे आप. Now 7 program एक साथ दिए हैं, I know that. But if you check it out, none of these programs are lengthier one. Within just a half page, you can complete the code. Remaining half page, even you can complete the output. In a single page, you'll have one program. So at max, it will be 7 to 10 pages you have to write. At max, okay? Now this is the reason I'm clarifying this thing, because I'm going to generate one more assignment submission with the same due date, 25. So till 25, you have to submit 2 assignments, and that will cover around 15 programs. Okay. So just start writing your code and output. Once you are done with 7 programs, scan it, convert it to PDF, and upload. Do not wait for the last date. Okay, never wait for the last date to come. As soon as you complete it, make sure that you submit it. Fine. So, well, that's all for the instructions from my side till now for Google Classroom. Any queries here? I'm looking at the chat box right now. So, any queries? Deepak, check your email ID. Okay, I think your email ID is wrong in the class list. I'll send you the link one more time. Okay, Deepak? As last week, we come to know that your email ID is not perfect in the Google, in the classroom list. So I'll update your email ID, and then you'll receive your link. Okay. Jill, you'll see your due date with every assignment within your login itself. Vyom, I think now it's perfect and you can hear me clearly.
Let me remove this. Deepak, just post your correct email ID in the chat box. I'm going to invite you right now. Well, I can see this is not exactly the ID. This is what the ID I get from the portal. And that's where we have a problem. So the actual email ID is something like deepakkumar.giri, right? Perfect. Okay. So just check your email inbox. You'll have your invite link. Yeah. Yeah, Vyom, it is just that I have sent the invitation link. You joined that Google Classroom. On the first page, you will have all the announcements. In the classroom page, you will have your assignments to be uploaded. जितने भी assignments हैं, उसके अंदर देख लो, आपको practicals जितने बताए गए हैं, उतने practicals आपको handwritten लिखने हैं. Then you take a photograph, convert it to PDF. एक असाइनमेंट की एक PDF जनरेट करोगे और क्लासरूम में अपलोड करोगे. That's all the instruction from my side till now. Okay. So that's all. Still, if you face any problem, if you have any kind of doubt, we can discuss in a lab session. Next lab में भी आप पूछ सकते हो, or else you can send me a mail. आप मुझे mail भी कर सकते हो. Fine. But make sure you follow all the deadlines and you submit your practicals. जब भी मैं assignment generate करूँगा, I'll make sure that you will have enough time to write all the programs. ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने आज assignment issue किया और कल की deadline रख ली. You will have enough time to write, but make sure that you do not miss any of the deadlines. डेडलाइन मिस हो जाने के बाद भी आप सबमिट कर पाओगे अपना असाइनमेंट, बट दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर मार्क्स. लेट मी क्लैरिफाई. डेडलाइन मिस होने के बाद भी आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर पाओगे, बट दैट विल अफेक्ट योर मार्क्स. सो अगर डेडलाइन चली गई है फिर भी आपने कंप्लीट किया है कुछ, तो अपलोड कर दो. Make everything available in this Google Classroom. Okay, so that was the Google Classroom. Now, let us go to the actual discussion of the practical list that we are following. Coming back to this list, till now, we have done 36 programs, right? And in the 36th program, we've gone for insertion, bubble, and selection sort. I'm not asking you to do merge sort, quick sort, and heap sort as a practical in your lab session. Merge sort और quick sort मैं आपको lecture में दिखाऊंगा. So the current unit that we are going through, recursion, उसमें merge sort और quick sort हम next lecture में पढ़ेंगे. Heap sort is not possible right now because heap sort समझने के लिए heap समझना ज़रूरी है और उसके लिए tree. So you are going to understand this thing in the next semester later on. Okay. So moving forward, today we will be looking at these programs starting from 37 up to 41. All these programs are related to strings. Okay. And when we say string, string is nothing but a character array. So indirectly, it is still a program related to array. अब उसको हम character array कर देंगे तो वो string हो जाएगा. Now let's discuss these programs one by one. 37th program says that write a program to find a character from a given string. User के पास से एक string get कर लो. Then ask user कि भाई आपको कौन सा character search करना है. So आप user के पास से एक string लोगे. Then एक character लोगे, and after that what you are going to do is you are going to check that character within your string. अब string अगर array है
तो हम simply linear search कर सकते हैं. And that linear search program we have already done inside our lecture part. So if I show you that in a lecture, array and strings, I believe we had gone for linear search, correct? So instead of searching the integer array, here you just want to search the character array. That's it. So declare a character array, ask user to give a string, percentage h se le lo. Then ask user to enter one character. Instead of integer value, you will have a character. And once you have that character, एक loop चला के आप वो character को compare करोगे. If you found that character, you break that process, and then you declare your result. अब आप एक flag लेके भी कर सकते हो. अगर flag set हो चुका है, then you can say that okay, character found, या तो फिर not found. या तो फिर इस तरह से I में भी जा सकते हो, but at this place I should be less than equals to the length of your string. Okay, length से कम है I, so found, otherwise not found. So that's a simple linear search, nothing else. और यहाँ पे भी आप क्या करोगे, I less than 5. अब हर एक string 5 कैरेक्टर की हो ज़रूरी नहीं है. So at this place when you go for a loop, आप यहाँ पे जब तक null character नहीं मिलता तब तक loop चलाओगे. So that will be the only change from this program, and that will give you the search operation. So what I believe is this, that's very much simple, and you can do it by yourself. So I'm not going to write that code. Next program is replace a character. Now, if you want to replace something, then first you need to find it. तो 37th प्रोग्राम में आप जो सर्च का प्रोग्राम बनाओगे, पूरा प्रोग्राम कॉपी पेस्ट हो जाएगा 38th में. और जब आपको वो कैरेक्टर मिलता है, आप लूप ब्रेक करते हो, जस्ट एट दैट टाइम आप उसको नए कैरेक्टर से रिप्लेस कर दो, एंड यू आर डन. दैट्स द 38th प्रोग्राम. ओके, सो if you can do 37th, then 38th is also done. Let's discuss the 39th program, where it says delete a character. Okay, now if you still want to delete it, you have to find it. So pehle find karo, and then you delete it. So let me do this 39th program, and alongside I'll show you 37 and 38th program, just not separately but alongside. So let us discuss this one, 39th program, delete a character from a given string. So let's move towards the development environment here. And the 39th program that we want to work on says that we want to delete a character from given string. So for that, what we first need is we need to have a string. And for that, we require character array, str. Now, just to be at a safer side, let's declare that array of 20 size. अभी के लिए हम वो string 20 characters की लेंगे. Not necessarily your string is going to be the length 20, लेकिन ये maximum size है array की, okay? And another character we will require here. अब अगर search करना है तो भी character चाहिए, replace करना है तो existing character and new character. So दो चीज़ें आपको चाहिए. And अगर delete करना है तो कौन सा character को delete करना है, you'll require that character ch. So for that we have those two variables. Now we also know that we are going to write loop. So एक loop control variable भी declare कर लें I. Now after that we'll go for the initial setup. So printf, and we'll ask user to, let's say, please enter string, and then we are going to scan that string here. I'm going to use scanf %s just to have that string here, and str. Okay, deliberately I've used one space before %s just to avoid buffer scanning problem. Okay, so we have that string. Then we are going to ask user to enter a character also.
please enter a character to delete, and then we are going to scan that character also. So %C and %ch. Remember, अगर string use करते हो तो ampersand नहीं आएगा, बाकी integer, float, character कुछ भी है, you have to write ampersand sign. So we have taken string, we have taken character. अब अगर इस कैरेक्टर को आप डिलीट करना चाहते हो तो पहले उस कैरेक्टर को सर्च करना पड़ेगा. So I'm doing the 37th program here. How we can do it? So we can run a loop. I equals to 0 से लेके I plus plus will be something like जब तक हमें null character नहीं मिलता from the string. So str of I is not equals to null character. Till that time you are going to run this loop. Okay, so this is going to be the loop for your program. Same loop रहेगी, सर्च करना है, रिप्लेस करना है या डिलीट करना है, कुछ भी करना है, पहले तो आपको वो ढूंढना पड़ेगा. एंड फॉर दैट यू आर गोइंग टू हैव कंडीशन str of I अगर गिवन कैरेक्टर ch से मैच करता है, देन यू आर गोइंग टू परफॉर्म समथिंग. ओके, सो अगर सर्च करते हो तो यहाँ पे फ्लैग सेट कर लो, flag equals to 1, and then later on you can always check that flag. अगर फ्लैग सेट है तो मिल गया, नहीं है तो नहीं मिला. That is your 37th program. Okay, 38th program says you repeat it, replace it. So okay, replace करने में सिर्फ flag नहीं चाहिए. Replace, what you can do is str of I जो आपको existing character मिला है, आप उसको न्यू कैरेक्टर से रिप्लेस कर दोगे. अब ये न्यू कैरेक्टर भी कैरेक्टर की तरह यूजर के पास से गेट कर लो. ओके, यू टेक दैट न्यू कैरेक्टर फ्रॉम यूजर एंड असाइन दैट न्यू कैरेक्टर टू दिस प्लेस. तो ये हो गया रिप्लेस. सो वी नो दैट हाउ टू सर्च, हाउ टू रिप्लेस. नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस डिलीट प्रोसेस. अगर ith कैरेक्टर को मैं डिलीट करता हूँ तो एक्चुअल में क्या होगा, उसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एक एक स्टेप आगे आ जाएंगे. जस्ट फोकस हियर. इफ आई से आई हैव गिवन अ वर्ड यूनिवर्सिटी, दिस इज माय वर्ड, एज अ स्ट्रिंग मैंने यूनिवर्सिटी दिया, एंड देन आई से दैट यू डिलीट वी फ्रॉम दिस स्ट्रिंग. अब अगर इस वी को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, वी को डिलीट करूंगा मैं, तो यहाँ पे एक स्पेस तो नहीं रख सकता मैं, करेक्ट? व्हेन आई डिलीट दैट वी, दिस इज द वी, एंड इफ आई डिलीट दिस वी, वी को अगर हटा दूं तो बीच में मैं स्पेस नहीं रख सकता. व्हेन आई डिलीट अ कैरेक्टर, आई एम नॉट रिप्लेसिंग इट विथ स्पेस, एक्चुअली आई एम डिलीटिंग इट. वहाँ पे बीच में कोई खाली जगह नहीं रहनी चाहिए. तो इफ़ आई डिलीट दैट थिंग, तो उसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सारे कैरेक्टर्स एक एक स्टेप लेफ्ट साइड आ चुके हैं. ओके, एक एक स्टेप लेफ्ट साइड आ चुके हैं वो, बिकॉज अर्लियर इट वाज समथिंग लाइक दिस वे. This is the index values. U is on index 0, N is on index 1, I is on index 2, V is on index 3, and so on. Correct? Now, if I delete this V, तो ये third index को मैं खाली तो नहीं रख सकता हूँ यहाँ पे. What I have to do is, I have to shift all these remaining characters to the left side. So E थर्ड पे आ जाएगा, R फोर्थ पे आ जाएगा, S फिफ्थ पे आ जाएगा, and so on. And at the end, I have to have null character. So when you found a character, जब भी आपको ये deleting character मिलता है, तो आप क्या करते हो, ये कैरेक्टर आपको ith पोजीशन पे मिला है, so I+1 से लेके एंड तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको आप वन स्टेप लेफ्ट लेके आओगे. So what we have to do is,
i+1 से स्टार्ट करके जब तक आपकी स्ट्रिंग ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक आपको नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता, तब तक सारे कैरेक्टर्स आप लेफ्ट साइड लाओगे। मतलब अगर हर एक कैरेक्टर को लेफ्ट साइड लाना है तो दूसरा एक लूप चलाना पड़ेगा यहाँ पे। So to have that second loop, let us declare one more loop control variable and let us write that loop here inside if. Remember, inside if. So I'm going to start this loop of j equals to, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? i+1 से स्टार्ट होगा। कहाँ तक चलेगा? जब तक मेरी स्ट्रिंग ख़त्म नहीं हो जाती। तो str of j not equals to null character and then j plus plus, that's it. Okay, so i+1 से लेके null तक हमने एक लूप चला दी। So starting with i+1, जब तक null character नहीं मिलता, you are going to run a loop. Now in this loop आप क्या करोगे? str of j, which is starting from i+1, उसको आप लेफ्ट साइड लेके जाओगे। j के लेफ्ट साइड क्या होगा? j-1 इंडेक्स होगी। सो jth कैरेक्टर को आप j-1 पोजीशन पे असाइन करोगे, सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंगल इक्वल्स टू साइन। सो दिस लूप is going to bring all those characters to left position. बाकी सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके वो लेफ्ट साइड खींच लेगा। अब जैसे ही वहाँ पे नल कैरेक्टर आता है वो स्टॉप कर देगा। अब वो नल कैरेक्टर को लेफ्ट साइड शिफ्ट नहीं करने वाला है बिकॉज ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे ही नल कैरेक्टर मिलता है ये लूप ब्रेक हो जाएगी, तो वो नल कैरेक्टर लेफ्ट साइड नहीं जाएगा। तो क्या होगा? कुछ इस तरह से लास्ट का जो कैरेक्टर है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि y को आपने 9 से लेके 8 में तो डाल दिया, लेकिन 9 पे जो y था इट इज़ एज इट इज़, तो लास्ट में डबल कैरेक्टर हो जाएंगे। सो एक्सप्लिसिटली वी हैव टू सेट नल कैरेक्टर हियर, एंड टू डू दैट हम क्या करेंगे? str ऑफ j-1 पोजीशन पे एक्सप्लिसिटली हम एक नल कैरेक्टर सेट करेंगे। ओके, एक्सप्लिसिटली व्हाई डू वी सेट दिस नल कैरेक्टर हियर? क्योंकि जैसे ही नल कैरेक्टर मिलता है वो लेफ्ट साइड नहीं आएगा। अगर वो लेफ्ट साइड नहीं आता है तो लास्ट का कैरेक्टर डबल हो जाएगा। सो जस्ट टू अवॉइड दैट थिंग, लास्ट में हम एक नल कैरेक्टर डालेंगे अलग से। सो जैसे ही आपको कैरेक्टर मिलता है आप उसकी जगह पे बाकी सारे कैरेक्टर्स को शिफ्ट करके यू कैन ब्रेक दिस प्रोसेस। शिफ्ट करने के बाद आप अपनी प्रोसेस ब्रेक कर दो। तो दिस ब्रेक स्टेटमेंट विल ब्रेक दिस आउटर लूप, ये बाहर वाली लूप को वो ब्रेक कर देगा। सो आफ्टर दैट वी कैन सिंपली प्रिंट आवर स्ट्रिंग एंड चेक इट व्हाट हैपेंस। ओके, स्ट्रिंग %s str. Okay, so once I am done with my process, I will simply print that string and I'll check it out कि भाई असल में वो कैरेक्टर डिलीट हुआ या नहीं हुआ। So that's all. This is our program. Now let's run this program and check what happens there. So उसने पहले string मांगा, let me give university. Then वो एक कैरेक्टर मांगेगा, let us give character v. तो उसने वापस से वो स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया, बट नाउ एज यू कैन सी यूनिवर्सिटी के अंदर से v निकल गया। ओके, v निकल गया। So that's the perfect output. Now if you do not set this
null character explicitly, तो last का character double हो जाएगा. Let me demonstrate that. University and V. So as you can see, last में double Y दिखेंगे, क्योंकि explicitly एक जो character null character आना चाहिए वो हमने नहीं डाला. So when you have this kind of problem, make sure that you end your string, you terminate your string at that place. Okay, so if I run this code one more time, and university is the word, and now let's say if I give I want I to be deleted, then it will print your string, and it has deleted the third character I from the given string. I is deleted here. But then it is only deleting the first occurrence. पहला occurrence जो था वो delete हो गया. दूसरा एक और occurrence है word के अंदर, लेकिन वो delete नहीं हुआ. Now why not? क्योंकि जैसे ही मुझे एक character मिलता है, match हो जाता है, मैं उसे delete करने के बाद अपना process खत्म कर देता हूँ. Break this loop. So जैसे ही उसको फर्स्ट अकरेंस मिलेगा, वो डिलीट करने के बाद ब्रेक कर देगा. इफ यू डू नॉट ब्रेक इट, देन इट इज गोइंग टू डिलीट ऑल द अकरेंसेस. लेट्स चेक इट आउट. यूनिवर्सिटी एंड आई. एज यू कैन सी नाउ दोनों आई डिलीट हो चुके हैं, क्योंकि हमने बीच से ब्रेक नहीं किया उसको. ओके, सो दिस इज योर 39th प्रोग्राम, डिलीटिंग अ कैरेक्टर फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग. और इसके साथ साथ हमने सर्चिंग और रिप्लेसमेंट ये दोनों भी देख लिए. सो मूविंग टू द chat screen, if you have any problem or any doubt here. Well, Vishal was asking for some example. I hope, Vishal, it is now clear with example of university. Deepak, you said ampersand str. When we have string, ampersand नहीं लिखा जाता. मैं हर बार बोलता हूँ, make sure that when you have a string, you never write ampersand str in the scanf. Scanf में ampersand नहीं लिखोगे, because array name itself is the address of that array. अगर आप str के पीछे index डालते हो तो ampersand करना पड़ेगा. ampersand str of 0, अगर पीछे 0 लिखा तो ampersand करेंगे. अगर सिर्फ str लिखा, then no ampersand needed. Well, so that was the 39th program. Now coming to 40th program, it says write a program to reverse a string. Well, when we were discussing string related functions in a lecture, we have seen this program. So let me show you that thing. If we go to lecture strings, string.c file, so at the time of string examples, we have seen number of string operations manually, right? Manual string operations like finding a length, copying a string, concatenating a string, comparing two strings, and so on. At that time, we have seen string reverse also. So this is the manual string reverse process. After that, we have seen few inbuilt functions also, like strlen, string length, strcpy, string copy, and so on. So in that example or in that program, we discussed this thing, how to reverse a string. अब अगर आप string को reverse करना चाहते हो तो it's very much simple. आप दो characters को swap करोगे. First character with last character, swap it. Then second character with second last character, swap it. Third character with third last character, swap it.
अब ये दोनों को आप स्वैप करते करते बीच में जब तक नहीं पहुंचते, यू आर गोइंग टू स्वैप दोस टू कैरेक्टर्स. When you reach to the middle place, mid position, you will break your loop. So first place आपको 0 से मिलेगा, last place आपको length से मिलेगा. So you find the length of your string and then you start your last character from just length minus 1 index and I plus plus and j minus minus. जब तक I less than j है आप ये प्रोसेस करोगे. When I becomes equals to j, या तो फिर I j दोनों को क्रॉस कर जाते हैं, then we'll stop this process. And inside this loop we will simply swap those two characters. दोनों कैरेक्टर को स्वैप कर दो and you are done. Okay. So this is the logic of reversing your string. After that you can print your string, and that's the next program, 40th program. Still, if you want explanation, you can refer the lecture recording. Fine. So that's the 40th program. And let's discuss the last program also, 41. It says you write a program to convert string into uppercase. Now, we'll make few assumptions here. First assumption कि user जो भी string देगा वो lower case होगी, उसके अंदर कोई upper case character नहीं है. Make sure. मतलब ये हमारा assumption है. अगर assumption नहीं लेते हो तो आपको extra validations करने होंगे. Now we will be not focusing on those validations right now. We'll be focusing on how we can convert that character from lowercase to uppercase. So let me show you this program also. Program 41. And what we want here is we want to convert a given string to uppercase. Now before that, I want to show you something. So let us print something here. Now what I want is I want to print one character, so %C, and I want to print that as a small a. So single quote a, this indicates it's a character, और उस character को print करने के लिए मैंने यहाँ पे %C लिख दिया. So this will work if I run this code, मुझे output में a दिख जाएगा. So similarly, I can print capital A also, %C, and capital A. Yeah, so small a, capital A. But when I print these characters using %C, it is printing a character. But if I print those characters using %D, okay, then it is going to print its ASCII value. Now, as long as characters are being handled with the ASCII value internally, and the ASCII values are nothing but some integer numbers, we can perform mathematical operation on characters. Character पे आप mathematical operation कर सकते हो, क्योंकि कैरेक्टर इंटरनली ASCII वैल्यू से हैंडल होते हैं और ASCII वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू है. So now what we want is we want to convert this small letter to upper letter. So जिसकी ASCII वैल्यू 97 है उसे मैं 65 बनाना चाहता हूँ. And then later on all the entire ABCD is sequential. So if A is 97, so small b 98 है, small c 99 है, and so on. And capital A is 65, capital B is 66, and so on. So the difference between these characters is going to be same, right? And that difference is 32. 32 का difference है इन दोनों के बीच. So अगर small a का capital A बनाना है,
तो 97 के अंदर से आप 97 में से आप 32 सब्ट्रैक्ट करो तो 65 मिल जाएंगे। सो अगर स्मॉल ए के अंदर से मैं 32 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आउटपुट में मुझे दोनों 65 दिखेंगे, राइट? दोनों 65 दिखेंगे। अगर वो दोनों 65 है तो उसको डिजिट के बजाय कैरेक्टर प्रिंट करो, देन इट इज गोइंग टू बी द कैपिटल ए, बोथ कैपिटल ए। सो व्हाट हैपेंड, दूसरा तो कैपिटल ए था, ओके, लेकिन पहला स्मॉल ए था, फिर भी -32 करने के वजह से मुझे आउटपुट में वो कैपिटल ए दिखा। एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू डू, दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। अगर आप कोई स्ट्रिंग को लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके हर एक कैरेक्टर की आस्की वैल्यू में से 32 सब्ट्रैक्ट करो। And that's what we are going to do now. So now let's do our program. We will require a string, that's all. We will require a loop control variable क्योंकि हमें एक loop लिखना पड़ेगा. And now let's ask user to enter a string. अब यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं lower case, okay, and scanf. We are going to scan that string now, %s str, and at last we want to print that string again. String is %s str. So as of now अगर मैं इसको रन करता हूं तो जो स्ट्रिंग मैं दूंगा वही स्ट्रिंग प्रिंट होगी। Okay, I've given university, fine. I've given small case university, it has printed small case university here. Okay, now just before we print it, let us convert it to uppercase now. And uppercase convert करने के लिए अब हमें पता है what we need to do is we need to subtract 32 from each and every character of that entire string. तो वो स्टार्ट हो जाएगा i equals to 0 से str of I, जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिलता तब तक ये लूप आप चलाओगे i प्लस प्लस। एंड फ्रॉम दिस इनसाइड दिस लूप आप क्या करोगे, str of I के अंदर से 32 सब्ट्रैक्ट करोगे and you are going to assign it to str of I again. So I'm using shorthand operator minus equals to. It is equivalent to something like str of I equals to str of I minus 32. Okay, minus equals to shorthand operator मैंने use किया. So this loop is going to subtract 32 from each and every character. तो ये हो गया uppercase. Then if I print that string, that will be the uppercase string. Now let's run this code one more time and let me give university lowercase, लेकिन अब उसने print कर दिया uppercase. Okay, so this is just a demonstration where you can work with your string and you can perform any of the operation that you want on the character of your string. You can change your character, you can update your characters. Yeah, so that's all from my side. That was the last program, 41 program. So just post your enrollment number in the chat box so that your attendance will be recorded, and then you start performing these practicals one by one, starting from 37 up to 41, and make sure एक बार ये program परफॉर्म हो जाए तो आपको लिखना भी स्टार्ट करना है, बिकॉज वेरी सून यू आर गोइंग टू अपलोड ऑल दीज प्रोग्राम्स इन द गूगल क्लासरूम नाउ. Okay, so that's all from my side. Now just post your enrollment number to record your attendance and then start your work.
Yeah, hopefully everyone has posted their number. I'm going to stop this recording now because we don't want unnecessary recording to be uploaded. You start performing these practicals. At any point of time, you have any query or doubt, you may ask me. This is the best time, lab session, to discuss and resolve all the queries. This is the best time to complete all our tasks. Fine. So that's all. I'm going to stop this recording now and you start performing your practicals.